एक्सपायरिंग में यूज करना है भाई। बढ़िया खेल रहा है बंदा, पूरा जोड़ बनता है, जोड़ बनता है, ठीक है भाई। जोड़ बनता है कभी और बढ़िया खेलता है तो भाई पटाए मुझे अच्छा रहेगा भाई। क्या आप बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो भाई, बहुत बढ़िया आप बहुत बढ़िया प्लेयर भाई। भाई देख ले मैच, देख ले। सिस्टम चला दिया भाई। कितने सब्सक्राइबर किए यार आप लोगों ने यार? 1K कर दिए, कर देना 1K जल्दी से, बैठ के करना यार। सब्सक्राइबर कर लो भाई जल्दी से यार, जल्दी से कर दो यार। 10 होके करना भाई, जल्दी से होके कर लो यार। होके सब्सक्राइबर करना भाई, एक बार होके ही तो कर दो भाई। भाई आए प्यारे, जीत हरियाणा लव कबड्डी भाई, लव जय हरियाणा। बता दिया तो बोला ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही करते हैं, सही खेल रहा है हिसाब से। चलो जिसे दोगला लग रहा है, दोगला वाले सपोर्ट मत करना, जिसको अच्छा लग रहा है सपोर्ट करना भाई। किंग मेकर मैच देखने के यार, देख ले भाई, देख ले। किंग हरियाणा लव कबड्डी भाई, धन्यवाद भाई लाइव देखने के लिए। हरियाणा वाले कितने हैं जो मेरी लाइव देख रहे हैं इस टाइम पे? हरियाणा वाले कितने हैं भाई? सिस्टम हैंग कर देंगे भाई, सिस्टम हैंग। लाइव पे हरियाणा वाले कितने हैं मेरे को एक बार बताओ जल्दी, मैं देखना चाहता हूँ। एक बार टाइप कर दो हरियाणा वाले कितने हैं, एक बार यस लिख दो हरियाणा वाले जितने जितने हैं भाई, पता तो चले भाई। हरियाणा वाले भाई दे रहे अपने, हरियाणा 250 दिया भाई, बढ़िया हरियाणा है। चल भाई हरियाणा है भाई, हर भाई हरियाणा से भाई। महाराष्ट्र से दिए, झारखंड से कुमार भाई है भाई महाराष्ट्र, परवेश बिश्नोई भाई हरियाणा से है, अमित भाई हरियाणा, प्रियांशु भाई गेमर भाई हरियाणा से है भाई, सागर जय हरी, सागर गुप्ता हरियाणा से है, राजस्थान से भी है भाई, सागर बिहार से है भाई, सुधीर हरियाणा से, सागर भाई इंडिया से है भाई, मिलाद की है। हाँ सप्लीमेंट मिला के छठी से पैक अच्छे है, सप्लीमेंट मिला के, सप्लीमेंट मिला के अलग प्रोडक्ट सही लगे, सही प्रोडक्ट कोई दिक्कत नहीं है। जाना है तो भाई चुपचाप रहो, ठीक है? मैं किसी को मैं पेड़ नहीं दे रहा, किसी को नहीं दे रहा, अगर बॉडी अच्छी बनानी है तो जाके जाओ, ठीक है? और टी शर्ट पहन रखी यार, मैंने खाई टी शर्ट पहन ली है, मैं थोड़ी देख रहा हूँ किसकी है किसकी नहीं। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, प्रोटीन के लिए तो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अगर तुम्हारे घर का नेचुरल अगर अच्छी डाइट है तो यूज़ करो। प्रोटीन पे इन पे कभी भी मत जाना भाई, नेचुरल देसी खाओ, देसी रहो। ये नहीं बोलूँगा प्रोटीन डब्बा बाकी मतलब वो भी है, लेकिन नेचुरल नेचुरल होता है यार, नेचुरल खा के कर, दिक्कत ये वही है। इसलिए इन पे ना जाके अपना वर्कआउट अच्छा करो, और वर्कआउट अच्छा करके डाइट अच्छी लो, यही जरूरी है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, इससे बढ़िया रहेगा, ठीक है? किसी ने प्रमोट नहीं कर रहा भाई, भाई क्लेम आ रहे हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, आने दे क्लेम यार, मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ ही गए, क्लेम आने दे, मोड बना दे। धीरे धीरे देखो, धीरे अभी मैं मोड नहीं बना सकता किसी का भी, लाइव चल रही है। देन कल मैं लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग की करूँगा तो भाई जब मोड बना सकता हूँ, अभी के लिए मैं किसी को मोड नहीं बना सकता। कल जो मेरी लाइव स्ट्रीम देखने आएगा गेमिंग का, जब मैं खेलूंगा स्ट्रीमिंग करूँगा, अगर जितने बंदे आएंगे कहेंगे भाई मोड बना दो, मैं उनको मोड बना दूँ, ठीक है भाई? सपोर्ट
करने वाले भाई आज ही नहीं कल भी दिखेंगे, मदद करने वाले कोई बात नहीं। लाइव से पहले सब्सक्राइबर कितने थे भाई? लाइव से पहले मेरे सब्सक्राइबर थे 30,229 सब्सक्राइबर थे और आप हो गए हैं मेरे भाई, आप मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं आज 80,706 सब्सक्राइबर। भाई मैं ये बोलूँगा थोड़ी ग्रेट भाई, थोड़ी ग्रेट। आज मेरी लाइफ से 4 काम लगाने में भाई कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं। कभी मैं 200 लाइव स्ट्रीमिंग करता था, कभी मेरा बैकग्राउंड था क्या लाइव स्ट्रीमिंग का। मैं डेली 70 दिन से नॉन स्टॉप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। मेरी म्यूजिक कभी नहीं गई, ना गई थी 10 इससे नीचे उसके ऊपर कभी गई। तो मैं हरियाणा से हूँ भाई, हरियाणा में गुड़गांव। आज मेरी म्यूजिक अच्छी गई है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू बहुत आपने मैंने सपोर्ट किया। सब्सक्राइबर कर दो यार, मैंने यार 25 मैंने है ना यार स्टार्टिंग से 1000 के सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया। पता है सब्सक्राइबर कितने मेहनत से बढ़ते हैं, 25 के लिए मैंने किसी के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। अब बढ़ रहे हैं, अब मेरे अच्छी बेटी है भाई, साथ है सब्सक्राइबर में रहना हिट होता है भाई। आपको क्या आप सब्सक्राइब कर जो भाई साथ है, अच्छे हैं, जो सपोर्ट करने वाले हैं भाई, आप हो साथ। पार्टी तो बनती है भाई, ओके कर दो यार, पार्टी तो मैं कर दूँगा यार, मज़ा आ जाएगा यार। मेरी गर्लफ्रेंड बीमार है, मैं क्या मेरी गर्लफ्रेंड बीमार है, मैं कैसे हेल्प करूँ भाई? मेरी गर्लफ्रेंड में बीमार है, मैं कैसे बस बस बंद कर दे मैच देखने का भाई। डीजे में खूब बजा रहा है, फिर भी समझ बढ़ा दे भाई। लेफ्ट में अच्छे कमेंट दिखाई दे रहे हैं। 1 लाख हो जाएंगे भाई, 1 लाख हो जाएंगे भाई, देखते हैं मैं कमेंट करके आया आ रहा है यार, कर दिया कमेंट करके क्या जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर तुम कमेंट कर रहे हो क्या मेरा क्या करेगा? तुम्हारे मेरे में क्या फर्क है? तुम्हारे मेरे में क्या फर्क है? जैसे कमेंट कर रहे हो वैसा मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा फर्क है यार। हाँ भाई लाडली करता है, क्या हाल है ब्रो? कर रहा है खाना खा लिया तुमने? अरे खाना खा लिया तो भाई लिया जी। हाँ भाई होगा भाई, खाना वाना खा लिया तुमने? देख ले भाई, नींद भी तो पूरी कर लिया अगर रात में जल्दी उठाया था कैसे कैसे बजे जाना है तुम्हारा करो भाई, सुबह जाकर बढ़िया भाई। गुरुघाट ठीक क्या आ रहा है? गुरुघाट की गर्मी क्या कर ये क्या हो रहा है? क्या डबल क्या नाम लेके क्या बोल रहे हो? गुरुग्राम में कहाँ से भाई? गुरुग्राम में भाई, गुरुग्राम में यहाँ लोकेशन नहीं दे सकते भाई। आज तो सब्सक्राइबर खाने हैं भाई, आज तो सब्सक्राइबर खाऊंगा भाई। आज मैं रात में है ना अपने सब्सक्राइबर में अपने सीसीटीवी की सेटअप करके मोबाइल में अपने सब्सक्राइबर करके देख ये यार इतने सब्सक्राइबर ये कैसे हुए? पहले तो कैसे हुए? 85 कैसे चला गया 25 से? किसी किसी के 1000 मिल जाते मेरे इसमें कैसे? ये कैसे? अरे भाई यार 2,40,000 गेम तो देख रहे हैं, मैच तो हमारा नहीं कर, मैच तो पहले की होती है, मैच तो देखेंगे ना क्या बात है इसका भी। अरे भाई 14 ओवर 121 रन खतरनाक चल रहे बढ़ा के so backing himself, I've no problem with that whatsoever. You will just be looking to push it in the gap. Just the one kick strike, 10 from the over, 122 for 4.
35 needed, or 30 balls for the Indian champions to win the World Championship of Legends Birmingham. Playing it pretty smart at the moment, Yuvraj and Yusuf. Run a ball 14, that's not a problem whatsoever. Run rate is well in check. Still must be a twist and a turn here. Turn. Saeed Ajmal to continue. Good hands, excellent support. Wahab Riaz, Waqar Yunus has come on alongside me. What do Pakistan need to do? Got to catch. You got to get rid of these two. They're both in good form. They both got 50 in the previous match, and they're in no rush. They know that the required run rate is within their grasp. The only way Pakistan can win this game, or can come back in this game, is by picking up not one, maybe 2 or 3 wickets. And are you happy with the trial by spin? I think it's a game which the spinners can win you. I don't think the pacers at this stage, because the required run is only hovering around 7. If it goes around 9 or 10, then you can say the pacers might come in. But at this stage, spinners got to give the breakthrough which Yunus Khan and team looking for. They need to block that single off, because that's the third time Yusuf has just rocked back off the spinner and just punched it through the vacant point region. Almost getting to the territory now, Walker, where you need an extra man inside the ring. Take a bit of a punt. Dropped. Oh, Walker, you said when I asked you, what do Pakistan need to do? You said catch. Should have been taken. Shoaib Malik, quite a good fielder, safe pair of hands, and it wasn't too far away from him. He had to really leap onto his left, but that might be the trophy. Oh, that looks really, really big from Yusuf Pathan. Now, looking to finish this in a flash with an ease, my trip 6. When you're chasing a small total, you've got to. This one should have been taken, and then look at that. What Yusuf Pathan did, lunges into it, put his right knee on the ground and hit it into the crowd. Second 6. Ease my trip 6. Previous over, he hit one to Shoaib Malik. Yeah, things are getting easier now. Comfortable. Yusuf Pathan taking the game. Pakistan required run rate. 6 now, 13 off the over, 135 to go. Yeah, Yusuf has power. Touch. Lovely late cut for 4. He knows exactly where the field is. He uses his wrist. He lets the ball roll right onto the face of the bat. Excellent from the experienced Yusuf Pathan. Four overs remaining, and this worm is catching up very quickly. 22 required of 24 deliveries. And India champions, they've got plenty of wickets in hand, and they're cruising at this stage. Partnership of 27, 22 deliveries it took them. It is more work done by Yusuf Pathan. 20 of 10. Yeah, the blue work, the Blue Express, charging to victory here. 20 from 24. World Championship of Legends. 10 days of epic action, enthralling cricket, partisan crowds.
Anything else left? I'll come back to you. Yunus been forced to bring his paceman back. The first delivery swung in a bit, so might see a little bit of reverse. That's the last option Pakistan have got. Can Wahab do the magic here? You've got to bring a man or two in here, Walker. The fire rate's 5.7, but you've got to get another man or two inside the ring. Just 4 inside. I think they've just got to go for it here, Pakistan, because otherwise India will win with 2 overs to spare. Yeah, I'm trying to think which fielder can come in. Maybe a mid-wicket fielder. Ask Yuvraj Singh to play across the line. Wahab bringing the ball back in. He's got a square fielder, wide mid-wicket, mid-on. So there's 3 fielders. Maybe bring one inside the circle. Well, Wahab's got a very, very badly bruised heel. Spoke to him this afternoon and he's under serious pressure. His heel, said he's in a lot of pain, a lot of discomfort. You just can't shake that bruised heel when you're playing day in, day out. Well, Yuvraj, I think, was expecting a short ball. They looked like he was about to turn his head and back away. Crowd have got their money worth. They enjoyed this tournament. We had a Pakistan-India game earlier. It was a full house and almost full here again. Change up. It's a little leg cutter from Wahab. Although Yuvraj Singh has faced, 17 delays for his 10, he feels that if he's in the middle at the pitch, Pakistan will always be threatened and feel threatened at least. And he's in no rush. He's taking his time. He's asked Yusuf Pathan to take the bowlers on, especially spinners, and he's done it beautifully. Been a good over so far, only 1 run. Shoaib Malik, leading run scored 245. Ian Bell, he didn't play as many games as Malik. Dappa, 225. Sharjeel, 221, and Ben Dunk. So some good numbers there. Well done, Shoaib Malik. Nice touch. Down to deep there. Should get 2 there, really. Saeed Ajmal is slow and slowly round to the right hand side and bowls the ball in. 17 done, 138 for 4. Nine wickets for Nathan Coulter-Nile. Shoaib Malik also picked up 9 for Harbhajan Singh. Today picked up 8. Abriaz, 8 for him. Nathan Coulter-Nile, the leading wicket taker in the tournament. Shoaib Malik, the leading run scorer in the tournament. Sohail Tanvir. One final roll of the dice here for Yunus Khan. Last roll of the dice. Pakistan got to get a wicket here. And Indian point of view,
They got to finish it in 2 overs. They don't want to go into the last over. Still very watchful, pushing the ball into the cover, looking for 2. Will only be 1. Speaking about big players, Wakar stepping up when it mattered. India were playing poorly. And Yusuf Pathan, 3 half-centuries in a row. And one of those half-centuries was that uncharacteristic half-century just to get India past the net run rate in their defeat. That 153 against South Africa. So those numbers are brilliant, but actually that half-century against South Africa, probably the most important innings he played in the entire tournament. Chipped down the ground. Ball safely, and with every ball that drops into no man's land, Pakistan heart breaks. Yunus Khan only hoping at this stage that some falls short. One of these 2 play a poor shot, lose their wicket, and the new batter comes in and they might sort of sneak in. 6.38 is the required run rate. You never know. You've got to take the game to the last over. Whatever you do here, Pakistan, don't give up. Get the game into the last over. Well, this is the first time a little aggressive from Yuvraj, and this was Yusuf Pathan against South Africa. It was a gritty inning, hit a couple of big sixes, but mainly he played on the ground, made sure that he doesn't lose his wicket, scoring 54. That was a magic innings, and a good inning by brother Irfan Pathan also. Yes, that kind of innings is not something you always associated with Yusuf Pathan in the nicest possible way. You think of his career in IPL cricket India, just smashing the ball all over the ground, out of the ground, but he showed all his experience just to get the job done. Never flustered, especially after the run out, the mix up with his brother, could easily have skewed his mindset. It was a wonderful knock. I think Yusuf Pathan is going to look to take a bit of risk on this delivery. He did. Shirjeel Khan was the man at mid-wicket. He was a little slow. And that smile from Yunus Khan was that you got to come in. You got to come in. You got to take those chances. Let's get a wicket here. You never know. He had 2 balls this over, just dropping into no man's land. So that tells me if I'm a Pakistan player, you're not out of it. Still need 15 runs. 2 balls this over easily could have went to hand. Got players from India thinking the game is won. They get a wicket here, get a new man in and keep him on strike for a couple of balls, this game will turn again. Big ball this. Squeezed. Should get back for a couple. It's a very, very good over. Just 6 off it. Well bowled, Sohail Tanvir. 18 done. 1-4-4 for 4. Considering what we see in T20 cricket nowadays, or modern cricket, this was a low-scoring contest. Pakistan couldn't manage anything more than 156. I think they were 15 to 20 runs short on this surface, looking at the Indians' batting lineup. Very smartly played once again. Yusuf Pathan, Yuvraj Singh in no rush, no hurry at all. And this is, for me, was a turning point. That catch taken, things would have been different. He had plenty of padding on the fingers, especially on the left finger. Couldn't really grasp that. Wahab again.
ये मिस करेगी Now ये then, मिस कर गई mid-off inside the ring. Yusuf realising and sensing the opportunity and takes another ease. Mike Tripsix, the brother loves it. The aggression. What a tournament Yusuf Pathan is having, or he had. Brilliant. Taking his team to the victory. Good start of the over once again. Tonking it over mid-off. Brothers happy. Goes leg side. Man in the deep, takes it. Sahib Maksud, I tell you what, Walker. It's not done yet. I hope it's not too late. Wonderfully taken, Shoaib Maksud. 6 on the first ball and a slow delivery from Wahab Riaz. Pick the man, Shoaib Maksud. Might be a little too late in this competition. 30 from Yusuf Pathan, a match-winning 30. 155, 150 for 5. Right then, over to you, younger brother. Irfan replaces Yusuf. 155, 7 off 10. Well, he's made job really easy for the younger brother. Fantastic knock from Yusuf. कोई बंदा 1 लाख करके दे रहा है क्या 1 लाख करके दे रहा है क्या भाई कह रहा है इधर आ जा अबे इतना मुद्दा लगेगा इसी तेरा कर देगा ये मैच में 2 छक्के लग जाएंगे ना तो इंशाल्लाह सारा 2 मिनट के अंदर तू भी कर दो यार प्लीज भाई ये कर दो यार इस सपना का मेरा सीजन नहीं होगा यार आज का नहीं होगा कर तू यार जो जितने भाई आ रहे हैं भाई साउंड बड़ा भाई सिस्टम हैक कर देंगे नहीं आया इधर नहीं पड़ेगा रे लिमिट लाइव है रे सुनना पड़ेगा नहीं सुनना तो निकल पहले सुनना पड़ेगा बढ़िया बहुत खतरनाक भाई के लिए सपोर्ट कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे भाई कर रहे हैं जल्दी जल्दी मैच में वो पता लगा चल रहा है सात 5 रन भाई हो जाएंगे यार अब इंडिया जीत जाएंगे भाई सोचे कर दो यार जल्दी सोचे कर दो यार जल्दी कभी कभी रिक्वेस्ट है इंडिया जीत रहा है ये यार प्लीज कर दो यार 3 लाख तक की चाहिए 3 लाख के लिए जल्दी सपोर्ट करो भाई सपोर्ट करो भाई अल्लाह के लिए सपोर्ट करो भाई
भाई स्ट्रीम कैसे करने को मैं तुमको बता दूंगा भाई, मेरे कल गेम स्लाइड करने को वहाँ पे आना आप लोग, फिर आप लोगों को बताना क्या स्लाइड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। भाई शोट आउट दे दो, भाई शोट आउट दे दो, भाई शोट आउट वरुण शर्मा को वन विल शोट आउट, वरुण शर्मा को भाई वो लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि 90 पे पहुंचे कम से कम यार, प्लीज 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 गाइस सपोर्ट कर दो भाई, मार्को सिस्टम हैक कर दो भाई, आपसे पूछे नहीं आते यार, इसके स्क्रीनशॉट ले लेता भाई, स्क्रीनशॉट ले लेता 3 लाख स्क्रीनशॉट लिया तुम्हारे भाई ने आज के, जल्दी से करो 3 लाख मैंने भाई 3 लाख यार, 3 लाख का मुझे लगा रिकॉर्ड है शायद, मेरा ही रिकॉर्ड होता है शायद यहाँ पे, अगर कोई गलती करेगा पैन मुफीद पेटीएम के लिए धन्यवाद भाई, यूपीआई से तो भाई कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, क्या नाम है उसका, पैन मुफीद मोहन भाई धन्यवाद, पैन मुफीद पेटीएम के लिए धन्यवाद, जो कर सकता भाई कर दो जल्दी जल्दी, धन्यवाद कर दो भाई, कर दो यार जल्दी से, जो मजा आया वैसे गाड़ी नंबर का मजा आया, साथ में बोलते 3 रन जीत गए भाई यार, सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, आप सब्सक्राइब बढ़ा दो प्लीज यार, 3 लाख की वोटिंग खतरनाक चल रही है यार, खतरनाक में खतरनाक मैच चल रहा है नेक्स्ट लेवल, आप लोगों को मतलब झंडे गाड़ेंगे यार झंडे, ये क्या बात है, झंडे लड़ गए बचपन भाई, जीत गए देखो लाइव कर दिया, कमेंट्री बोलने वाले को मुझे टमाटर सालों से हमारे मुझे टमाटर दोस्तों जीत कर गई, मेरे रहते हुए लेकिन मैं था, आप बोलोगे नहीं मैं था भाई, बोल रहा था इसलिए जीत गए, आप बोलते साले क्या बोलते हो, आप जीत गए ना, जीत गए भाई, जीत गए, मजा आ गया भाई, एक नंबर यार भाई, एक आवाज अब है ना तिरंगा फहरा दो भाई बढ़िया तरह से, तिरंगा कॉपीराइट 5 मिनट भाई, कॉपीराइट के टाइम जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो भाई जल्दी, भाई आवाज क्या भाई, भाई को आवाज बड़े से सब्सक्राइब कर दिया भाई, आवाज बढ़ा दो सब्सक्राइब कर दिया, तो भाई मुझे नए बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, धन्यवाद भाई, Not the case. Not the case. Hit it nice and straight over the bowler's head to finish this game and win this trophy. India coming from behind and manages to win the trophy here at Edgbaston. What a beautiful scenes.